ओके, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी थैंक यू। डेब्यू की दुनिया, वेब सीरीज़ की दुनिया में आप डेब्यू करने जा रही हैं। जी। मोह, तो जी। आप ज़रा हमें बताइए कि मोह आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, मोह की डेफिनेशन क्या है इस फिल्म में आपके लिए? ओके, वन क्वेश्चन, आई फॉरगॉट ऑल योर ओके, क्वेश्चन इस फोर। फिल्म हाँ। में मोह की डेफिनेशन क्या है हाँ। आपके लिए? वेल, मो इज़ जैसे हमारे ट्रेलर में आपने देखा, what you sometimes what you want might not be exactly what you need. So like in the trailer we're saying ki, like what do you want to eat unlimited pizza and never become fat, or you want six pack abs without going to the gym. So when you tell someone this, they think कि और क्या चाहिए life में, and you want six pack abs without going to the gym, right? What more do you want? But you don't realize that that's not really important once you lose something that you actually that actually means a lot to you, like a parent. I've lost my dad, so I know the grief of losing a parent. Like you can't compare it to anything else in the world. For me, I think you can't even compare it to anything. And probably when something like that happens, you realize that all these other things, like a new phone or a new car or things like this, are not important at all. So when Kevin and Kabir, sorry, narrated this film to me. I was like, this is a very very emotional story. If I do it really well and pull it off, I think I can make a lot of people cry. And there's this whole monologue that happens, that last monologue, which is like a 3 minute thing. So he asked me, he was like, can you do it in one take, and can you cry and all and do it? And I was like, yeah, let's do this. So I think we pulled it off because whoever's watched it has really enjoyed it. So I'm quite happy. एंड ये पोस्टर में दो लड़की, दोनों आप ही हैं। हाँ, एक दोनों थोड़ी सी, में। एक ब्यूटीफुल स्माइल है और एक बहुत ही इमोशनल है, आंखों में आंसू हाँ। है। तो थोड़ा बताइए क्या हो रहा है? सो दिस इज श्रुति, आई मीन दोनों श्रुति है। इट्स श्रुति की कहानी है, जो एक फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट है. सो शी इज़ लाइक ऑल यंग people. I don't want to really stereotype, but a lot of people nowadays, not even young, a lot of people are on their phone all day. Even जब भी आप थिएटर में हो, instead of watching the movie, people are on their phone telling people what they think of the movie that they're watching. No one's actually doing the things they are. जब भी आप डिनर टेबल पे बैठे हो, तो instead of talking to the person next to you, everyone's on their phone. So she's a girl like that. वो phone पे है. She doesn't really care what her parents say. If they give her any advice or something, she finds it really irritating and very annoying, because like, why are you advising me? मुझे पता है मुझे क्या करना है life में. मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ. So like, don't talk. You know, till she takes people for granted, and then it's about how she like loses her parents. And the jacket is a very important character in this hooded fur jacket. Is a very important character in our film. And yeah, it's an emotional thing. I don't know how much I should give away for those who haven't watched it, but it's a nice emotional thing. So she's happy and everything's normal. Her life is perfect. She lives with her parents and lives a perfect life. They're well-to-do. Her mom makes her dabba also and gives her, and she's like, "Arey, why are you making me dabba? I'll figure out food." She comes home late at night. Her parents don't really say anything. She's given a lot of freedom also, but she realizes how important they were in her life and how she was just taking them for granted. ओके, मैंने वेब सीरीज़ तो नहीं देखी, मैंने जो ट्रेलर देखा, ट्रेलर में ढेरों सारी लाइनें आप यूज़ करती हैं। हाँ. सिनेमा का इम्पोर्टेंट क्या है, हाँ. डिप्रेशन का क्या है, हम्म. आपका कौन सा फेवरेट है या Wow. ये फेवरेट था. ये वाला? So it is about depression. I think the film deals with her getting depressed. It starts off with Shruti जो depression में है. So ये बताती है कि ये depression में क्यों है. She's sitting with a psychiatrist and वो अपनी कहानी बता रही है. So that is what the film is about. So yeah, I think it's really nice. I like the teaser कि वो switch over होता है. It starts off when you think कि it's happy and you're talking about frivolous stuff, like like, what do you want, a new car or a new house or stuff like that, and then it gets like really serious and emotional towards the end, where you're like, I don't know where this is headed, and then I'm like in tears at the end. So I like the switch over. Yes, it's about a girl who's in depression. It's not about how she it's not about what you should do when you're in depression. Actually, it's a movie about how she got into depression. So yeah. एंड ये वेब सीरीज़ की दुनिया की अगर हम बात Yes. करें, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? डेब्यू है आपके लिए, जी. कितने पार्ट होंगे आपके इस नहीं, वेब ये सीरीज? फिल्म है. इट्स अ स्टैंड अलोन फिल्म. इट हैज़ अ बिगिनिंग एंड एन एंड. वेब सीरीज नहीं है. इट वाज अ 4 day शूट दैट वी डिड. सो इट्स लाइक अ शॉर्ट फिल्म दैट्स अ स्टैंड अलोन फिल्म. इट्स नॉट एन एपिसोड ऑफ एनीथिंग. इट्स नॉट. तो ये जो प्लेटफॉर्म है लाइक हाँ. जी फाइव पे ऑन है, हम्म. ये कैसे, इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं ढेरों जी. सारी वेब सीरीज, ढेरों सारी फिल्में ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं, चाहे हाँ. नेटफ्लिक्स की बात करें, जी. जी फाइव की बात करें, यस. अमेजोन की बात करें, लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है। आपने भी डेब्यू किया है, तो इस यस. प्लेटफॉर्म को कैसे देखते हैं आप? आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि Z5 ने मुझे मौका दिया.
टू टेल द स्टोरी, जहाँ पे आई हैव दिस ऑसम कैरेक्टर, क्योंकि एज एन एक्टर आई थिंक बहुत ही फुलफिलिंग है व्हेन यू गेट अ गुड कैरेक्टर जहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हो, सबको दिखा सकते हो, आप आप एक कैरेक्टर को यू कैन ब्रिंग योर कैरेक्टर टू लाइफ. So I think I'm really really lucky to have this, and I'm very thankful to the guys at Z5 who are pitching this in such a big way, who put it out there for everyone to watch. Yes, a lot of people do watch web, nowadays. It's not just restricted to only films. A lot of films web पे आ जाती है बहुत जल्दी, like 1 or 2 weeks में you find them online also. And it's nice. It's a whole new world. This is my first thing that I'm doing here, so I'm very excited. I'm happy people have really liked it. And with this film, I've seen the audience is for web is so big, so I would love to do more stuff on the web also, but like really nice stuff. Now this is really nice and I've got such great feedback, so I want to do really really good stuff. और आपकी मम्मा ने देखी ये वेब सीरीज, ये हाँ फिल्म? हाँ, my mom and my granny saw it first. क्या फीडबैक था? So क्योंकि हम देखते हैं आपकी जो भी स्टंट वाली पिक्चर आती है, आप हाँ। स्टंट छत पे करते हो, आप हाँ। वो सभी बहुत ही ध्यान से देखते हैं हम। my mom teaches me actually, वो मेरी ट्रेनर है. आपके ट्रेनर भी हैं? हाँ, so and she's very honest, like if she, my mom is honest enough to, like suppose हम लोग like मैंने एक फोटो शूट किया और मैं बहुत अगली लग रही हूँ, she'll be like this is very ugly and you look really bad in this, so she's very honest with me. मेरी ग्रैनी बिल्कुल honest नहीं है, उनको सब अच्छा लगता है, मैं कुछ भी करूँ, इवन अगर वो हॉरेबल हो तो शील से दिस इज़ द बेस्ट एंड माई ग्रैंड डॉटर इज़ द बेस्ट. तो उनका रिव्यू तो इतना आई कांट टेक सीरियसली बिकॉज वो मेरी सबसे बड़ी फ़ैन है. So, but she saw the film and she started crying. My mom got very emotional when she saw it, and my mom and me are not very emotional. We're very emotional people. We don't show our emotions really. But unki aankhein bhar gayi when she watched it. So I was like, okay, I've done a really good job, I'm sure, with this. I wish my dad was alive. I think he would have really enjoyed this film. He really liked watching people doing like subtle acting. He hates when people over do stuff. So I think he would really really like this film. So. Yeah, I think people's parents will really like it. I sent it to a friend of mine and she showed it to her parents and they really loved it. So I'm glad it's a film that is going both ways. Really young people and their parents are also liking it. So और इसके अलावा आपकी फिल्म भी आ रही है। Yes. तो बताइए कि कमांडो 3, तो बताइए Yes. कि शूटिंग आपने ट्राई की, कंप्लीट हो चुकी है, कैसा रहा एक्सपीरियंस? almost complete हो चुका है. There's like patchwork left. We've announced a release date which is September 20th this year. And बहुत सारा action है. There's I'm playing that same character Bhavna Reddy जो ऐसा ही बात करेंगा. The people really liked her in part 2, so they repeated her in part 3. And I'm lucky as a heroine to be repeated in the next franchise of such a big action film. I'm getting to do a lot of action also in this, beating up big guys and flying kicks and backflips. So it's fun. I've really enjoyed myself. I broke my finger during the shoot. It's healed now fully. I can bend my hand. It took me 4 months to do this, but now finally I can do this. And yeah, I really enjoyed doing this film. एंड जो आपकी एक डिफरेंट टोन में आप आती हैं जी. तो वो जो एक भी अंदाज दिखाना चाहेंगे, बात करेंगे? हाँ, मैं वैसा ही बात कर रही हूँ. ये फिल्म में भी मैं ऐसा ही बात कर रही हूँ. तो पीपल रियली लाइक दैट. नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ करेगा तो मैं बोल रही, मैं कुछ ज़बरदस्त प्यार हो जाएगा तुम्हारे शहर में, मैं चपका दूंगी एक दो. ही स्माइलिंग फ्रॉम देयर, आई कैन सी. उसको आपका So, कैरेक्टर बहुत पसंद है। तो इसमें आपको और पसंद आएगा बिकॉज वो उससे भी शरारती है, उससे भी पार्ट 2 से भी और ज़्यादा पागल है और ज़्यादा एक्शन करती है. पर पार्ट 2 में जो पागलपन था वो डबल हो गया है इसमें. सो देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ मैडनेस. वो बहुत sarcastic है और फनी है. एंड तो बाहर से शी इज़ लाइक एंजेलिना जोली और अंदर से शी इज़ जॉनी लीवर, इफ आई हैव टू से. फिल्म के आने के बाद से आपकी फैन फॉलोइंग और भी बढ़ने वाली है। I hope people enjoy it. Yeah, that's my main thing. I think I'm one of the very fortunate actresses जिनको इतना fan following है, जो बहुत loyal है. मैं जो भी करती हूँ लोगों को पसंद आता है. मैं न्यूज़पेपर ड्रेस पहन के रेड कार्पेट पे जाती हूँ तो लोग मुझे प्यार देते हैं. मैंने नोज रिंग हम और सवाल पूछते हैं, मैं रहता हूँ। हाँ, और आप लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हो. आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट. आई नोटिस कि कुछ एक्ट्रेसेस को लोग इतना सपोर्ट नहीं करते जो मुझे मिलता है सपोर्ट. जो भी मैं पागलपंती करती हूँ इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस डालती हूँ या मैं एक सीरियस फिल्म करती हूँ या आई फील रियली लकी. एंड आई थिंक हाफ द क्रेडिट इज़ बिकॉज मेरा डेब्यू 1920 था एंड पीपल सॉ मी इन दैट. तो नाउ इट्स लाइक अदा कुछ करेगी मतलब अलग करेगी. सो दे वेट फॉर दैट. सो आई एम क्वाइट फॉर्चुनेट एंड लकी, आई थिंक. एंड इसके अलावा अदा जी, यू एंड प्रभुदेवा कुछ Yes. वो मूवी कर रहे थे। Charlie Chaplin 2. So Charlie that Chaplin. just released and it did really really well. That song, the song actually was what was released first, and I got like really cool feedback from it. The one I sang also, and yeah, it's nice to do films in different languages, different roles. That was an out and out commercial film, जहाँ पे it was like an out and out comedy, and that was I had dance and
It was a fun entertainer. This is like a mild, soft, more on the real side film. Commando is an action film. I'm also doing a Telugu film, Kalki, which is a big period film where I'm wearing like saris and being very demure. And so I was shooting Commando and that simultaneously. So Commando, I'm being this badass, full on, and then in Kalki, I'm being this demure, sweet. So we were doing alternate days of that. I hope I pulled them off both well now. ओके, एक सवाल ये था कि टोटल कितनी लैंग्वेज आती है आपको? हिंदी, इंग्लिश, साउथ की? Telugu, तेलुगु आती Tamil. है? I'm a Tamilian, so हाँ, Tamil I know. हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, Marathi I had in school higher level, so I've studied in Maharashtra. So 5 लैंग्वेज, गुजराती? Gujarati I can understand, but I can't speak. Punjabi Gujarati I can understand, but to speak these 5, yes. सो अगर जैसा कि तेलुगु में आपने हाँ। आप तमिलियन? हाँ, मैं Tamilian हूँ. हाँ. हमारी फिल्म आ रही है मोह, आप वेब सीरीज पे आज हाँ. आज कैसे बोलेंगे इसे? Actually, before saying that, I should say that the response was so good for Mo. They are dubbing it into 4 languages now. So the guys from Z5 just told me, so I'm very happy for that. So എന്നോട് film Mo release ആയച്ച്, so please Z5 പാത്തുക്കോ. एंड एक आखिरी जाते जाते ये पूछना चाहेंगे कि 11 तारीख से हमारे हिंदुस्तान में वोटिंग चालू होने जी. वाली है। बहुत ही बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में जी. वोटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी. आप अपने फैंस को, लोगों को वोट के प्रति क्या मैसेज देना चाहेंगे? I think, well, please vote. You know you should. I think people know now. It's a responsible thing to do. Please go vote. It's nice to hear someone say it. Maybe it'll ring another bell in their head and they know कि vote करना चाहिए, because it's really important. You're voting for someone who's taking your country forward, who's taking care of your country. Please vote for someone who you can trust, I think, who you know will take care of you and your country. And it's easy for people to say that हमारे roads अच्छे नहीं है, potholes है, ये है. It's very easy to crib, but if you're cribbing, then instead of that, like, vote for someone who you think will take care of this and change it. Someone who will bring change, someone who will do something for the country. So, थैंक यू जी। Thank you so much। Thank you, sir. गुड लक। थोड़ा सा विजुअल्स लेंगे। मैं ये आज ही देखने वाला हूँ क्योंकि टाइम का Please थोड़ा देखो। प्रॉब्लम था। Please मेरे को देखी है आज शाम को